वेलकम टू ओडिशा ऑटोमेशन सॉल्यूशन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक का ऑपरेशन के बारे में। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कैसे सॉफ्टवेयर थ्रो से कैसे यूज हो रहा है वो हम अभी असाइनमेंट के थ्रू से हम डिस्कशन करेंगे एंड सिमुलेशन करेंगे। ओके, देखिए, डिजाइन a control circuit by using hydraulic valve and cylinder such that when push button is pressed the cylinder goes forward and when push button is released the cylinder come back. Okay, cylinder will come back. Okay, see, this is the my double acting cylinder. Okay, see, solenoid operated. 4/2 valve, manually कुछ नहीं चाहिए, only. Okay, this is the manually operate 2/3 to 4/2. Okay, देखिए 4/2 भाग है हार्डली का। यहाँ पर मैं सोलेनोइड यूज कर रहा हूँ। ओके, एंड मैं स्प्रिंग रिटर्न। ओके, देन पंप यूनिट, रिटर्न टैंक, ये है सोलेनोइड कॉइल है ये। थ्रो इलेक्ट्रिकली हमको करना है। अभी देखिए 24 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज चाहिए मेरे को। पहले सप्लाई वोल्टेज, देन 0 वोल्ट। ओके, देन 1 पुश बटन, and solenoid valve. This is my solenoid valve। 0 वोल्ट को कनेक्ट कर दीजिए। ओके, इसको दीजिए SL। दिस वन इज S1 स्विच पुश बटन। ओके, एक बार देखिए, डिजाइन ए कंट्रोल सर्किट, इसको पास ले जाइए। Design a control circuit by using hydraulic valve and cylinder such that when push button is pressed, the cylinder goes forward. When push button is released, the cylinder come back. Okay, see, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। जैसे मैं पुश बटन को किया हूँ, देखिए, goes forward, when released, the cylinder come back. Okay. When the push button is pressed, that time my cylinder goes forward. When push button is released, that time the cylinder come back. This is the operation of through electrohydraulic. This is the hydraulic section. Okay, this is the electrical section. Through electrically you are controlling the hydraulic section. Okay, this is the solenoid valve. This is the solenoid coil. Okay, थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में और एक ऑपरेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे।